Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10, Habitat, and today is its 7th lecture. So my dear students, before moving on towards the main lesson, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So you have to answer a few questions. Quickly define habitat. Very good. A natural living place of a plant or an animal is called habitat. Very nice. Now quickly tell me, what is an ecosystem? Very good. The interaction between the plants and animals with their environment is called ecosystem. Now, my dear students, what is the difference between habitat and ecosystem? Habitat is the natural home, whereas ecosystem is the interaction between the plants and animals living in a habitat with their environment. Okay, so that interaction is makes up an ecosystem. Okay, my dear students, now let's quickly move towards an activity. So my dear students, you can see different habitats on your screen. We have already studied about different types of habitat: aquatic, forest, desert, polar region. So my dear students, now what you need to do is you need to fill up this worksheet, write down your name and your class on the top. Then how would you describe? There are 4 habitats given on the worksheet, and you will write about each habitat. For example, what you will write about desert: what is the temperature, how does it look like, what are the different plants and animals that live over there, how is the temperature. So this is how you will write about each habitat. And you will know by the end of this worksheet that how each habitat is different from one another. Pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now you are able to tell that how different habitats are different from each other, how their environment is different, how the temperature is different over in each habitat. Okay, my dear students, now quickly open page number 81 where the objectives are written, and today we will cover this objective that identify the environmental factors like temperature, light, water that support life in a habitat. So my dear students, हमने पिछले lectures में पढ़ा कि कैसे जो हैं वो different habitats होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से different होते हैं. So basically अब हम पढ़ेंगे कि कौन से environmental factors हैं जो कि एक habitat को दूसरे habitat से different बनाते हैं. और basically ये environmental factors ही हैं जिसकी वजह से एक habitat दूसरे habitat से आपको different नजर आता है. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective, and it is who created the night and the day and the sun and the moon. They float each in an orbit. So my dear students, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो एक तरतीब से जो है बनाया है. जैसे कि दिन के बाद रात आती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, सितारे बनाए हैं, और हर चीज़ को एक मदार में अल्लाह ताला ने एक ऑर्बिट में जो है हर चीज़ जो है वो अपने रहती है. इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं बनाए हैं जो कि हर हैबिटेट को जो है वो डिफरेंट बनाते हैं एक दूसरे से. So my dear students, now quickly move towards the pre-reading question. How desert habitat is different from polar region habitat and forest habitat? अब desert habitat जो है वो polar region से और forest से कैसे different है? Deserts are extremely hot and dry places. There is very less rainfall. The animals that live over there are camel and cactus. They are prominent plants. And let's talk about the polar region now. The vegetation is extremely less, या तो होती ही नहीं है, plants नहीं होते, temperature बहुत ठंडा होता है, snow रहती है throughout the year. The animals which live over there are Arctic fox, penguins and polar bears. और vegetation में सिर्फ month और 2 के लिए जो है आपको plants नज़र आते हैं जिनमें Arctic bell heather है और sulfur buttercup है. So my dear students, now let's talk about the forest habitat. फॉरेस्ट हैबिटेट में आपको प्लेंटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स नजर आते हैं क्योंकि वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो मॉडरेट हैं और ज्यादा लाइफ को सपोर्ट करती हैं. नाउ क्विकली टेल, कैन अ फिश सर्वाइव इन फॉरेस्ट हैबिटेट? नो, it cannot live without water. Very nice.
So my dear students, now let's quickly open page number 88 in the books. Pause the video and open the page. I hope everybody has opened page number 88. Let's quickly first look at the picture on this page where you can see animals and plants, and let's see that how different environmental factors are helping them out. Water regulates the body temperature of animals and plants. So पानी जो है वो एक environmental factor है और ये plants और animals को कैसे benefit करता है कि ये उनके body temperature को regulate करता है. Water transports nutrients from whole plant. ठीक है, अब पानी जो है वो soil में से अंदर जाता है plant के और सारे nutrients जो हैं वो plant के अंदर supply करता है from the roots to the top of the plant. Heat and light from the sun make food on earth. अब सूरज की जो रोशनी और गर्मी है वो ज़मीन पे खाना बनाने के या फूड प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है. एयर प्रोवाइड्स लाइफ गैसेस और आपकी हवा जो आपको नज़र नहीं आती उसके अंदर लाइफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं. Okay, my dear students, now let's quickly read about the environmental factors of habitats. The factors which are necessary to be present in a habitat are called environmental factors. तो जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, जो कि हैं सनलाइट, वाटर, soil, air, and temperature are the primary environmental factors required for the survival of living organisms. So sunlight, water, soil, air and temperature जो हैं ये एक habitat के अंदर plants और animals के survival को यकीनी बनाते हैं. Now let's talk about the first environmental factor, which is water. Can you survive without water? Can plants and animals stay alive without water? Certainly not. So water is also the essential component making a habitat livable. It moderates the climatic conditions and making it ideal to live in. So my dear students, पानी जो है वो जिंदा रहने के लिए बहुत important है. Without water, plants and animals cannot survive. इसके अलावा ये हमें जिंदा रहने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. Water helps to regulate the body temperature of animals and humans and their blood pressure, और ये हमारे blood pressure को भी regulate रखता है. In plants, important nutrients are transferred from soil to the plants through water. So plants जब पानी जो है वो soil में से intake करते हैं तो उसके बाद वो plant की roots से top तक पानी के through ही supply किए जाते हैं. Therefore, the presence of water bodies in a habitat ensures the survival of organisms. So my dear students, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे organisms या plants या animals जो है या आप कह सकते हैं life जो है वो ज़रूर exist करती है जहाँ भी आपको पानी नज़र आएगा. Okay, my dear students, okay, पानी जो है वो बहुत important है plants के लिए भी और animals के लिए भी. So my dear students, let's read about the next environmental condition, which is air. Air is an important factor to live on earth. Air provides life gases to animals, oxygen gas, and plants, carbon dioxide. So my dear students, animals जो हैं वो कौन सी life gas air में से लेते हैं? Oxygen. और plants कौन सी लेते हैं? Carbon dioxide. Moreover, it exerts pressure required to breathe normally. So my dear students, हवा के बगैर भी आप जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि हवा के अंदर हमारे जिंदा रहने के लिए गैसेस मौजूद हैं. प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं, वेयर एज ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो एयर का है वो ये है कि ये जो आप नॉर्मली ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं ये भी एयर प्रेशर की वजह से मुमकिन है. Now, my dear students, let's quickly move towards the next environmental factor, which is temperature. Suitable warmth in an environment favors a healthy ecosystem. अगर एक environment के अंदर suitable warmth होगी और suitable temperature होगा तो एक healthy ecosystem जो है वो create होगा. Although it fluctuates in different geographical regions. लेकिन कुछ जो है वो अर्थ के पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है. फॉर एग्जांपल पोलर रीजन्स में देयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, वेयर एज इन डेजर्ट्स इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट.
लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स इन एरियाज में रहते हैं वो अपने आप को इस टेम्परेचर का आदी बना लेते हैं एंड दे अडैप्ट टू लिव इन सच टेम्परेचर कंडीशंस. Animals living in there get themselves adapt accordingly. Suitable temperature activates the internal body functions. It enhances growth in plants and animals. So my dear students, जहाँ पे भी suitable temperature होगा, plants और animals जो हैं वो normally grow कर सकेंगे और उनकी growth को benefit होगा, उनकी growth जो है वो enhance करेगी. So my dear students, we have read about 3 environmental conditions today: water, air and temperature. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice. For the practice, you will be given a worksheet, worksheet number 9. You will write down your name and your class at the top and the environmental factors. So my dear students, fill in the blanks here. The word bank is given on the top. So you have to fill in each blank, each blank with the correct word. The factor, let's do the first blank. The factors which are necessary to be present in a habitat are called environmental factors. So you will write here. Okay, this is how you will complete the rest of the fill in the blanks. Now the next part of the worksheet is I need. So आपको एक प्लांट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है और ये प्लांट जो है इसको क्या क्या चीजें चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ, आपको ये चीजें जो है वो ब्लैंक्स के अंदर फिल इन करनी है. फॉर एग्जांपल, प्लांट्स नीड डैश फ्रॉम एयर. तो कौन सी गैस जो है वो प्लांट को चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. रूट्स टेक इन डैश फ्रॉम द सॉइल. ये जो रूट्स हैं ये क्या चीज टेक इन कर रही हैं? दे आर टेकिंग इन वाटर. एंड प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड. आपको सन नजर आ रहा है तो इट नीड्स सनलाइट टू मेक इट्स फूड. वेरी गुड. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन कंप्लीट योर वर्कशीट. I hope you have finished the worksheet. So my dear students, इस practice से आपको ये पता चला है कि कैसे different environmental conditions जो हैं वो plants और animals को support करती हैं to live their life, to survive also. Okay, my dear students, now it's time for the evaluation given on page number 96. I will ask a few listening and speaking questions. So you can see question number 20 on your screen. What does air provide to plants and animals? The air provides life gases. Very good. To plants, it provides carbon dioxide, and to animals, it provides oxygen. Question number 22. Describe the role of temperature in a habitat. Very good. It helps the plants and animals to grow. Very good. Okay, my dear students, now is the time for your homework. So, my dear students, home activity number 7 is given on page number 89. Which environmental factors are present in your environment? Make a list. So, my dear students, आप एक जहाँ रह रहे हैं that makes up your environment. अब आपके environment में कौन कौन से factors जो हैं वो present हैं? हमने काफ़ी सारे पढ़े हैं आज. Name a few. Sunlight, heat, temperature, air, water, soil also. All these environmental factors are present in our environment. So you have to write them down in your notebook and complete your homework. So my dear students, from here we will move towards the wrap up. So my dear student, water, sunlight, temperature, soil and air are necessary environmental factors in a habitat. तो एक habitat को कंप्लीट करने के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके नेम्स जो हैं वो हैं वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड एयर. सो दे मेक अप अ हैबिटेट. और जैसे जैसे ये चेंज होते जाते हैं वैसे ही जो है वो हैबिटेट भी चेंज हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.